Hello, guys. Welcome to United Bedtime Talks. I hope you are all having a very good evening because India एक और T20 मैच जीत चुकी है. ऋषभ पंत with a brilliant 50 and सबका विराट कोहली favorite, Cristiano Ronaldo of cricket has scored another 50. Again, he couldn't get 100, so a few people will be disappointed. सो आज बहुत इंटरेस्टिंग डे रहा है इन टर्म्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड न्यूज़. पॉगबा के चेल्सी लिंक्स बुलशिट, हैरी मैग्वायर का बैकलैश along with Raf का support. So there has been a lot going on in United's world, and the Roses Derby, the one we all are looking forward to. So before going into it, let's introduce to our panels. We have Pratyush Anand, usual regular. हर चैनल में रेगुलर होता है. So yeah, we have Mudit, 90 minute के editor, senior editor, great writer. You should check out his writings. And we have a new guest here today, Paritosh. He's a veteran of Manchester United Supporters Club Ahmedabad. So welcome, guys. Let's get straight into it. Let's go with the Raf Rangnick press conference. Some of the things which is said, काफी interesting लगी मुझे. First of all, captaincy, the hot topic of last few days. He said that, and I quote, Harry Maguire will stay the captain until the end of season. Does it mean that it is the beginning of the end of Harry Maguire as a captain? कि season खत्म होगा, he won't be the captain anymore. Is it that indication? Let's start with Mudit here. हाँ इंडिकेशन तो इसका डायरेक्ट ही है बिकॉज why is he saying that? There's one reason to it is because he's not going to be managing the club after this season, so he's going to leave that decision to the new manager, and that's why he's playing it safe here and not disclosing anything with regards to the captaincy, is because one, there may be no decision yet on who is going to be the United manager, ठीक है, and secondly, it might be possible that he's also kind of saving the player here. He's not letting criticism get to him, but at the same time giving the fans also what they need. Ka decision ले लिया जाएगा भाई, tension मत लो. It's something like that according to me. Pratyush, what are your thoughts on it? तो मैंने तो पहले भी बोला है कि मिड सीजन में चाहे कोई भी मैनेजर बीच में भी आता है तो जनरली चेंज नहीं किया जाता है कैप्टनशिप. उस सीजन के लिए वो कैप्टन रहता है क्योंकि तुम्हारा अंदर का जो डायनेमिक्स होता है, टीम डायनेमिक्स रहता है, दैट इज नॉट गुड टू चेंज समटाइम्स. कभी कभी ये बढ़िया रहता है कि आप एक 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 पूरा एक सीजन में एक कैप्टन रह के चले. फॉर वन सीजन देयर इज जस्ट वन कैप्टन. और कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि कोई दूसरा मैनेजर आता है, वो चेंज भी करता है. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस डजंट मेक सेंस कि हमारा जो क्लब है वो आगे फ्यूचर में जिस जिस तरफ जाएगा, जो फ्यूचर में हमारा जो डायरेक्शन रहेगा, तो हम अभी से उस बेसिस पे डायरेक्शन नहीं ले डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि हमारा फ्यूचर ही डिसाइडेड नहीं है. We don't know which manager is going to come. We don't know which players are going to stay. We don't know which players are going to come. तो जब हमारा कुछ कोई स्ट्रैटेजी है नहीं अभी क्लियर, कोई पाथवे है नहीं क्लियर, तो हम अभी से डिसीजन किस बेसिस पे लें? देयर हैज टू बी अ क्लियर पाथवे ना कि हाँ ठीक है, हम 6 महीने के बाद ये करेंगे. तो अभी के समय पे अगर हम अभी से इसको इस तरह से चेंज करेंगे डायरेक्शन, तो हम उस पॉइंट पे 6 महीने के बाद पहुंचेंगे. जाके पास कोई लोकेशन नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, तो फिर हम डायरेक्शन किस बेसिस पे लीजिएगा? दूसरा चीज यहाँ पे ये आ जाता है कि मैग्वायर और रोनाल्डो का जो पुल है, जो उन दोनों के बीच में ये बहुत ज्यादा बीच में आया है न्यूज में कि दे आर लाइक पावर स्ट्रगल चल रहा है वहां पे. भाई इफ रोनाल्डो और मैग्वायर के बीच पावर स्ट्रगल होता ना, मैग्वायर वुडंट हैव बीन एबल टू विन दैट पावर स्ट्रगल एट एनी कॉस्ट. दैट्स हाउ बिग रोनाल्डो इज. वो अगर वो चाहता, मैग्वायर वुड हैव बीन डन विद द कैप्टनशिप बाय नाउ. उसका पुल नॉट सिर्फ ऑन फील्ड नहीं है, ऑफ फील्ड बहुत ज्यादा है उसका इफेक्ट. बोर्ड हमारा उसके हिसाब से चलेगा. ही इज दैट बिग अ क्लब, क्योंकि बोर्ड के पास हमारा दिमाग है नहीं.
कि वो अपना कुछ सोचे, अपने हिसाब से चले। तो द मोमेंट दे सी कि रोनाल्डो इज गोइंग एवा, दे विल जस्ट स्टार्ट डूइंग व्हाट ही आस्क्स, व्हाट ही सेज, लाइक जैसा कि हुआ था मूरिनो के टाइम पे व्हेन पोग्बा वेंट हेवायर, तो उन्होंने वही किया जो पोग्बा ने कहा। दैट्स हाउ वी वर्क। तो वहां पे कोई पावर स्ट्रगल मुझे लग नहीं रहा है। मैगवायर ये सीजन के एंड तक रहेगा, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता राफ रैंगनिक इस सीजन के बाद रहेगा मैनेजर, सो आई डोंट थिंक ही वांट्स टू इंटरफियर एंड सेट अप अ प्लेटफॉर्म फॉर अनदर मैनेजर टू कम, दैट दिस इज व्हाट आई वांट, यू हैव टू वर्क ऑन दिस। ही हैज लेफ्ट इट ऑन द नेक्स्ट मैनेजर टू कम, कि आप आओ, अपना टीम असेस करो, अपना डिसीजन लो। Fair enough. Fair enough. Paritosh, what are your thoughts on it? On it? Um, I also kind of agree. I think Rangnick did a very good thing कि उन्होंने पहले से ही बता दिया कि यही मैनेजर रहे, यही कैप्टन रहेंगे for now, and that is a good thing because mid season change करते, we already know Maguire's form is literally down in the dumps right now. He's trying, but he's not able to do what he was able to do last year or even in the Euros. So उसमें अगर उसको कैप्टनसी भी चली जाती तो आई थिंक इट वुड हैव बीन अ वेरी bad thing for him. It is already bad and it would have gone worse. So giving him a vote of confidence, I think, helps Maguire, helps the team, and helps Rangnick's whole idea that I am going to stay here 6 months and the next manager is the person that is going to decide. मेरे पे नहीं है ये. I am going to keep him for now and let the next manager see what he wants to do. So I think that way it is a very good thing. I especially like this about Rangnick, that he's very straightforward in the conferences, or from what he has said, I think it is pretty clear that he wants to give that confidence to Maguire कि भाई तू ही है अभी, तू ही मैनेजर, तू ही हमारा कैप्टन है, तेरे मैनेजर की तेरी बैकिंग है अभी, now go and perform and show everyone why you are the captain. So I think that is a good thing that he did, that he put it out there. So media से लेके सब एकदम like they would calm down with this, all of this Ronaldo ripped and whatever. Whether it is true or not is completely secondary. I don't think it is true. I completely agree with Pratyush there. But just calming down the media, taking it off Maguire and that whole thing is a very good thing that Rangnick did in the press conference. Agreed, agreed. But then let's just imagine a situation, okay, where Maguire is not performing up to the task. एंड जो एक अच्छा प्लेयर होता है, अच्छा कैप्टन होता है, अच्छा लीडर होता है, ही नोज दैट व्हेन ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, ही और शी, तो could it be a conversation like, from Harry Maguire to Ragnick that, maybe I shouldn't be the captain the way I'm performing? ऐसा conversation हो सकता है क्या? ऐसा होना चाहिए. It's not even like should I maybe drop me from captaincy, but maybe drop me for a few games, because players do that. It's not something that's not happened Unheard before. of. So it's been done before. As a player, if you feel you're low on confidence, and I mean, when players get slacked, the managers come to their rescue. But when players themselves know that they are not playing well, they go to the manager saying, "Give me some time off. Probably I need to get my head straight, and then I'll start again." But I don't think he's doing that, because he thinks he's perfectly fine. Which, okay, ठीक है. But then दिखाना गेम में. So coming to the players that are not playing, Edinson Cavani, आज न्यूज आया था कि he is fit enough again to play, and Ralf Rangnick in his presser said that he is not fit enough. He is also having stomach problems. मोमोज खा रहे हैं क्या ये लोग in their lunch and dinner? After Rafael Varane, Edinson Cavani saying stomach issues. So what's going on? Edinson Cavani almost features for every game internationally. When it comes to Manchester United, he is as available as Pogba. So क्या चल रहा है? वो प्रत्युष, I honestly think उसका एक हाँ चीज प्रत्युष, है. Cavani If here we is look, sorry for that, Pratyush. if Yeah. एक मिनट पहले कमेंट क्लियर कर देते हैं रैंगनिक का इसमें. He's having some problems with his groin and also his stomach. That's what he said. I mean, it may also be an injury, a knock, and along yeah, with that, a stomach issue. So, mm, I don't believe in the fact that a player like Cavani would like not want to play. वो खेलना चाहेगा ही definitely,
but players look after themselves very well these days, so he wouldn't want to take any risks. That's all I think. But why और does ऊपर it से come out like, it's a slightly half-hearted from Cavani? Because last wala jo press conference tha, before 2-3 matches, Ragnick said that he suddenly got injured. We tried everything, but he said he's not available to play. So it's coming out as if he's not 100% into it. अगर ऐसा होता तो probably पता चल गया होता अभी तक. हर बार ऐसा coincidence हो रहा है. It's happening multiple times that he's not there for either big games or at crucial moments when we need him. Or and then the rumors of him not liking Manchester come up like anything. So in the media we have this saying कि जब कुछ गलत हो रहा हो ना उसको और गलत करो. ठीक है, तो वो और गलत जो है वो हमारा काम है करना, मैं नहीं करता, बट हमारा काम है करना. लेकिन majority of these things stay नहीं, inside. मीडिया क्या बोलेगी? कवानी डिडंट लाइक द फूड, वो 1 साल पहले बोला था ना मैनचेस्टर में खाना अच्छा नहीं है, तो इसलिए खाना अभी उसका पेट बिगड़ गया है. मौसम के साथ साथ खाना भी अच्छा नहीं लगा, टटिया लग गई उसे और घर पे बैठा है अभी. यही है. These things happen, man. These things happen with Yeah. every player. It's natural. I don't think we should dig deep into it. Or plus उसका age भी है. It's not like he's in his prime. So it's much advisable for him to be perfectly fit and then play rather than playing uncomfortably and then injuring himself more. प्रत्युष कुछ बोल रहा था तू, sorry. मैं ये बोल रहा था, जब वो आया था हमारे पास तो उसके पहले भी 6 मंथ्स का ले ऑफ के बाद ही आया था इंजरी के साथ एट पीएसजी. वो एंड ऑफ द सीजन नहीं खेला था, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास आया था तो उसका कोई इंजरी हिस्ट्री नहीं था. वी ऑल नो दैट ही इज इंजरी प्रोन नाउ एट दैट एज, तो वी कैन दैट्स व्हाई वी वर लुकिंग फॉर अ स्ट्राइकर दिस सीजन ना. इनिशियल डेज जब समर में हम आए थे एंड वी वेंट फॉर रोनाल्डो व्हेन एज सून एज ही बिकेम अवेलेबल, क्योंकि कवानी का जो क्वालिटी था, जो मूवमेंट था, वो किसी और के पास नहीं है. रैशफोर्ड के पास नहीं है, ग्रीनवुड के पास वो मूवमेंट नहीं है. मार्शल को तो खैर बात ही करना बेकार है. तो ये दोनों जो जिसको देखे थे, ग्रीनवुड भी हमारे पास नहीं है एंड रैशफोर्ड इज नॉट अ स्ट्राइकर. तो कवानी वो चीज था. अब रोनाल्डो है, बट वी न्यू दैट इवन इन द लास्ट सीजन कवानी वाज नॉट अवेलेबल फॉर द बिग मैचेस या इन द क्रूशियल मोमेंट्स, क्योंकि वो इंजर्ड होता है. वो बहुत रेगुलरली इंजरी प्रोन है, बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है. सो दैट इज नोन. सो यू कांट कम आउट एंड से कि हम हिस्ट्री में देख चुके हैं लेकिन इस पर अलग है, क्योंकि बिकॉज द ट्रैक इज द सेम. Technically, I'm going to take a different stand to you guys, to be really honest, because it has been a pattern actually with Cavani कि वो international game खेल के आता है, उसके बाद he is never available. Okay, and international games के लिए has always been available, and I can understand कि वो South America जाता है and the travel is huge and is with his age and his fitness, you have to take care of all of that. But at some point you have to think that we need to make the decision for this. And the other thing is, Fred also goes there, right? Fred also plays for Brazil. He also travels that much, but he's available, and Fred does a far more physically demanding role than Cavani. I love Cavani. I think with him in the team, we would be far better, because as जैसे आपने बोला कि उसका movement, his the way he plays is actually very helpful to our forward line, which requires someone to give them space instead of being in that space, especially someone like Bruno. So I want him to play, but it's just that the coincidences keep happening very regularly. So uh, I think I also feel कि वो half-hearted था from Rangnick to just shield the player here. But yeah, this is something that we need to look into. Obviously, next year we were going to make a decision on the striker, given what happened with Greenwood and also Cavani's age, and Yep. what is happening with Ronaldo as well. So we will look for a striker, but yeah, this is kind of annoying that every time we need Cavani, he's never there. Every time there's an international break, then you have to just forget about him for another 2 weeks. So it's like he's not there for 3 or 4 months of a season. So it's huge. I read somewhere that he's missing his 20th game of the season out of 35, and that's more than 60%. So that's huge. So you need to then take into consideration it does not happen that regularly. It should not happen that regularly. And he's not that old as well. He's like 34 or 35, right? So he's not that old. He can take Yep. care of himself. But yeah, I think it's the player's decision as well, more than the manager. And uh, I agree with you that he is a good player and we need him, but he needs to like
be fit for us sometime. Fair enough. Well said. So, coming to the striker's position being vacant, Anthony Martial has scored after a long time. So, United have two strikers for the next season, Anthony Martial and Cristiano Ronaldo. With the likes of Cavani and Greenwood issues. So Aditya says that promote academy players. I think we should. We have a lot of good academy players that includes the like of Jimmy Garner, Deshaun Bernard. We have Hugel in terms of but all of them at best could be, we have Ahmad and Facundo as well. All of them could be at best the squad players. Starting 11, probably Jimmy Garner is the new expectation, is the new Van de Beek, is the new Jano Zai, or whosoever came up, and had a very strong name, uh, is the one where people are really hopeful. But I don't think they are ready for the first 11 if we want to challenge for titles. At best, they could be squad players and they should be integrated into it. That's my take on it. Guys, we have a very big breaking news here. I want to share it with you all first. So, Atletico Madrid has 5 positive cases. Simeone, Koke, Griezmann, Herrera, and Joe Felix are isolated. So, four of the Oh, players cannot play. Yeah, two play Their two. The manager manager cannot and play. the manager and one player were positive yesterday, and ये लोग आज हुए बाकी. Exactly. The match will go on or it will get postponed. Match होगा. Juju फिर is भाई on. तो फर्स्ट लेग में ही अपने को जीतना है मैच, टाई खत्म करना है फर्स्ट लेग में ही. बिल्कुल. सेकंड लेग में अपना कोई ठिकाना नहीं है. Gardner still has a 34 lot shots, more one to go. goal. Gardner has been doing good in the championship. To be honest, he can come back, and you cannot just right away put all the pressure on him. आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करेगा. क्योंकि आप नए प्लेयर के साथ खेलते हैं तो उनके हिसाब से भी आपको समझना है कि उनका क्या मूवमेंट है, उनका क्या पोजिशनिंग है. दैट्स वाई इट इज सेड ना दैट जो बैक फोर रहते हैं उनके बीच में चेंजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि बैक फोर एक दूसरे का पोजीशनिंग, एक दूसरे का मूवमेंट समझते हैं. अगर बहुत ज्यादा चेंजेस होता है बैक फोर में, स्पेशली द सेंटर बैक्स, तो वहां पे मिस कम्युनिकेशन होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है और उसके कारण गोल्स बहुत ज्यादा होते हैं. तो दैट्स व्हाई एवरी न्यू प्लेयर दैट कम्स इन, लोग क्यों हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड का ट्रांसफर पॉलिसी में बोलते हैं हमेशा कि वी गो लेट, वी शुड एक्चुअली बी रेडी बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीजन. क्योंकि आपको 10 दिन 15 दिन का टाइम मिलता है उस टीम के साथ वर्कआउट करने का, उस टीम के साथ प्रैक्टिस करने का, एसोसिएट होने का, एडजस्ट होने का, समझने का. तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो गार्डनर भी अगर नेक्स्ट सीजन हम उसको लोन पे नहीं भेजते तो वो आएगा, कुछ मैचेस, कुछ प्रैक्टिस मैचेस खेलेगा, कुछ इंटीग्रेट होगा, कुछ स्क्वाड के थ्रू गेम्स उसको मिलेंगे. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, वी हैव टू सी वेयर ही इज. Ideally, जगह है for Jimmy Garner next season. हाँ, We will bring one CDM hopefully. एक लाएंगे, ठीक है. I hope दो लाएं, ठीक है. We need at least two players. Pogba will be I, gone. I Matic don't will think be we gone. need two CDMs. I think we need one CM CDM CDMs. and one with CM. वन सीएम मत, क्योंकि अगर हम दो सीडीएम ले आएंगे ना तो फिर वही हो जाएगा कि फिर हम पॉल पोगबा को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे. So the point हाँ, is with McFred किरण and a एंड new आदित्य. signing. एक मिनट रुक. ये लोग ने कमेंट किया इधर regarding whether the match will go. Yes, it happened in the day, but there has been an update that their La Liga game is going on. They are not going to postpone that game either. So I don't know if the Champions League will be postponed, or maybe I'm not sure. Postpone हो गया क्या La Liga game भी? The Kiran says it's an old news. हाँ, आया था लास्ट थोड़े 15-16 घंटे पहले ही, बट अभी दो न्यू प्लेयर्स हैव बीन एडेड टू द पॉजिटिव टेस्ट, बट पोस्टपोनमेंट का कोई न्यूज़ नहीं आया अभी तक उनके मैच का. Smith has a very positive comment. गानर की बातें बंद करो, ग्लेजर सुन लेंगे तो डीएम नहीं लाएंगे. Let's keep it at PKL. ग्लेजर्स काश हिंदी समझते ना तो इतनी गालियां समझ सके होते अभी तक जो इंडिया से मिले हैं उनको.
I think Jimmy Garner, Garner अगर फर्स्ट टीम में आ भी जाए तो भी आई थिंक वी शुड ब्रिंग अ सीडीएम एज यू सेड आई दैट ही नीड्स टाइम टू गेट इनटू द टीम ही टू acclimatize with the players and personally मैं बोलूँ तो I think CDM defense are two things where central defense and central midfield are two places where a youngster coming in from outside has the most amount of eyes on him and that he needs to be very very good at to be able to succeed. So it is better that we give them time and space to grow into it. Academy players को सबसे इसलिए you see that academy players mostly wings or fullbacks पे ज्यादा आते हैं. They get more debuts there because it's easier there क्योंकि उनकी body grow नहीं हुई होती है. Then also they can manage over there on the side. But center of the pitch, it is not possible unless and until you are physically there to be able to perform. Garner obviously has become that. It looks like that he's one of the main guys in championship, which is good because championship is a very is more physical, you would say, to the Premier League at times. So it's good, but yeah, I think we should still bring in one CDM. Hopefully, we bring him if Pogba goes. I'm still here at if I know that he is going to go, but I hope he does not, to be honest, because I am sure that we are not going to replace him. But if he goes, so fir we need a CM, as Mudit said that we need a CM and we need a CDM. So we need two guys in the center of midfield next year. Smith just asked the same question that I answered. Felicia, He knows my Pogba love. I think I don't want Pogba. To be very, very fair. To be My honest, reasons are not with associated with Pogba or his footballing style or anything. My reason is simply his agent. And this guy, Raiola, comes on the crucial moments of the club, of the season, and just, you know, speak poison about the club, about its bullshit. manager. Yes. Ole, I was actually, I'm not a big fan of Ole, but I was, angry about big when fan. Raiola took us You as a said that manager. he became famous because of his lucky goal. He was just lucky. That was Ishan's comment, not mine. Don't interchange those comments. But as a manager, I was not a big fan. But when he talked about Ole, but that is not what I wanted. Like as a fan, we can speak, we can criticize our manager because we love the club. He is Yeah, just taking a money out of the definitely. club. He has got nothing to do with the club. So he is the major reason why I don't want Pogba here. It's not about Pogba. It's about everything that Yeah. surrounds him. So there No, were I think I agree with you. The I think I baggage. agree. There are a couple of things with Pogba which are annoying, like honestly. The thing is, one, he gets injured a lot. He has been injured a lot in the last couple of years, which is very annoying. Second, his yeah. agent, as you said, बहुत annoying आदमी है. I think how is he even working in football? I don't know. Like I think he's a leech. Honestly, I know people जो उसको support करते हैं and they say that he makes the players feel at home, so they support him. But it doesn't make sense. जब ऐसे like I would prefer my agent to be better. And the third thing is that the wages. I have been against the wage structure for a long time now. And Pogba already he has broken our wage structure already. And अभी उसको नया contract दे दें तो it will be breaking it even further. And given that we already have Ronaldo, I am sure Pogba is going to ask. I mean, Rialo or Pogba, whoever is going to ask the same as Ronaldo. And frankly, we don't need to give him that. So obviously, I agree with you that he should leave on principle. He should leave. It's just that how do you replace someone like him? Like अभी भी जो दो या तीन game में where he has played, you can see the difference in quality. Like the passes, the movement, the everything in midfield. It's just so smooth when he's there. So how do you replace Yeah, that? but That then is my biggest worry. yeah, you need to replace just 2-3 good months. Like last assist he made before this one was 6 months back. 4 games, 7 assists. Everybody was going, wow, Paul Pogba is finally unlocked. And 6 months tak kuch nahi. He gets injured. He barely plays half the season. Barely. Yeah, So I don't see a huge replacement in terms of availability. In terms of quality, maybe yes, but then it's been a mixed bag anyway. He turns I up in agree. some games where he is world class. He's better Yeah. than anyone.
but then half of the games he I don't know, tackles players and give penalties and jumps with his hands up, and gives penalties. So he does that as well. So yeah, that's all I want to talk about Pogba. Let's come to two more players. Very interesting comments by Raf Ragnick that 2 weeks back the atmosphere wasn't as good as it is right now, because the two players that were not getting time have left the club. That is Donny Van de Beek and Anthony Marshall. So those were the two out of I think few more who were creating a ruckus in the camp. What do you think? वैंडरबिक के बारे में ऐसा सुन के बुरा लग रहा है मुझे, लेकिन आई एम नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज you probably know. I kind of told you guys thoda about that and दुख हुआ, but ठीक है. I mean, see, he waited for a long time. ठीक है, and then if you listen to his comments, he also said that the exit from Man United was perfect for him. It's something that he wanted. So I still मेरे को digest करने में difficult हो रहा है कि he was one of those who was affecting the dressing room atmosphere. तो ठीक है, पी लेंगे ये दूध भी. मार्शल का I can expect should play. मार्शल का तो आदत है घर में ही थाली में छेद वो सब करके जाता है. वो सब छोड़ दो, वो सब जाने कभी दो कभी बस. होटल चला जाता है. यार बंदा 100% कमिटेड चाहिए फील्ड पे है तो. आधा टाइम सल करता रहता है, तू तेरे में टैलेंट है, तूने हक दिया उधर भी. यू आर डूइंग, यू डिड वेल, यू स्टार्टेड वेल, यू कुडंट कैपिटलाइज ऑन इट, यू मूव्ड ऑन, दैट्स इट. इसमें नो, आई मीन वन यूनाइटेड का भी फॉल्ट है बिकॉज दे अडोर्ड दिस गाय. दे कंसिडर्ड हिम टू बी लाइक, इसमें बैलन डोर क्लॉज डाला हुआ था कि तुझे बैलन डोर क्लॉज मिलेगा तो हमको पैसा भी मिलेगा, हमको पैसा भी देना पड़ेगा. इस बंदे के लिए ऐसा टैलेंट था ये, इट्स नो डिनाइंग दैट. जिस हिसाब से स्टार्ट किया था उसने, ही वाज, बट ही इज हिमसेल्फ रिस्पांसिबल फॉर हिज ओन डाउनफॉल. एंड उसमें फिर ड्रेसिंग रूम की माँ बहन कर रहे तो निकल निकल. ये सिर्फ आई डोंट थिंक कि ये सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में ऐसा होता है ना कि हमारा जो स्क्वाड था वो बलून था. आपके पास इन्फ्लेटेड. इतने ज्यादा प्लेयर्स हैं कि आप सबको मौका दे ही नहीं सकते हो. आप चाह के भी नहीं दे सकते हो. आपने कहते हैं माटा को भी बैठा के रखा है फॉर व्हाट आई डोंट नो. वो खेलता ही नहीं है. शायद ही उसके कोई मैचेस ब्लॉग्स भी खेलता बंद हो है. गए, उसके ब्लॉग्स भी बंद हो हम्म. गए यार. तो वो नहीं खेलता है. फिर If we didn't have Rafael Varane, I would have agreed with this. तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं ना जो we like what Ralph is trying to do in this window was to trim down that size. जो हमारा बलून स्क्वाड था उसको ट्रिम डाउन करने के लिए लाइक देयर विल बी अ क्लियर कट पाथ कि ये प्लेयर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, दे आर गोइंग टू द फर्स्ट टीम प्लेयर्स. बाकी अब हम क्लियर है कि बाकी प्लेयर्स को मौका देने का बात नहीं है यहाँ पे. दे आर इन द स्क्वाड, दे आर अ स्क्वाड प्लेयर, दे विल बी रोटेटेड. बट आपका जो मेजर इश्यूज थे एंथनी मार्शियल एंड मेंडी, तो आपको पैंडेमिक का ही चल रहा था ना कि पैंडेमिक शुड बी प्लेड, पैंडेमिक शुड बी प्लेड, पैंडेमिक शुड बी प्लेड. तो वो निकाल दिया. बोला अब किसको खिलाओगे, अब कौन है जो फ्रेड और मैकटोमिनी और आपका मैटिच इज योर मेन प्लेयर इन द मिड. अब खिला लो और किसको है. यू हैव गॉट 2 places, 4 players. क्या बोलते हैं, पॉल पोग्बा, फ्रेड, मैकटोमिनी, मैटिच. रोटेट कर लो आप. Simple. You have got rotation, you have got cut down size, and you have got players who are going to perform for you. Means you need them. Rather than saying कि हम experiment कर लेते हैं कि एक बार वैंडेबिक चल जाए as a DM या in a double pivot. तो at that Manchester United level, if you are going to just keep on experimenting, और वो experiment अगर खराब चला था तो मैनेजर के लिए भी खराब होता है, वो प्लेयर के लिए भी खराब होता है. क्योंकि अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड में फेल करते हो तो बहुत मुश्किल होता है उस फेलियर से उभरना. सो इट इज बेटर फॉर इवन पैंडेमिक दैट वो कहीं और जा रहा है. इफ ही परफॉर्म्स ही कैन कम बैक एनी टाइम. मैनचेस्टर यूनाइटेड में ही कैन कम बैक एनी टाइम, बट विद अ बैकिंग कि यस आई कैन परफॉर्म इन प्रीमियर लीग, आई कैन परफॉर्म इन दिस पोजीशन. सो लेट्स सी क्या होता है. अभी फ्यूचर डिसाइड करने से कोई फायदा नहीं है. इट्स वे इन द फ्यूचर. अभी पहले हमारा नेक्स्ट मैच वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एवरी मैच इज अ बैटल फॉर अस. So let's come back to our battle, top four.
Are we the new Arsenal? Uh-huh. Every season we are just looking for top four. Uh, so if we talk about our game at Allen Road, after 19 years, after 19 years with fans, first time, full house, a very famous derby, a vicious game, जहाँ पर fans they make worst of the worst comments. They'll call Manchester United with some other word that I don't want to speak here. So, guys, what do you think? They'll What do you do think about the everything. game? They'll do everything to affect us. But I don't. I think modern day football, mein the players are ready for any and every abuse or any and every atmosphere. They should be ready for this game. I mean, most of most of these players. I mean, the European players have never played in this derby, so they've only heard about it and seen. So for them, it will be just another football match, according to me. That's how modern day football goes. Derby अपन नाम देते हैं सिर्फ. But someone who's coming from outside the country and has not been an English player, I mean, जो भी non English है हमारे लिए उनके लिए it will be just another game. And we've romped them before, we will romp them again. हम Pratyush Paritosh. technically English players के लिए भी this is not a derby anymore. I mean, Leeds were हाँ, non-existent for most part of our 2000s, right? कुछ नहीं बचा अभी इनका 2000 क्या है. 2010 I 2003 या mean, 4 में वो गया था ना वो. 2003 was the last game. Yeah, उसके बीच में they also beat us in Before. one cup game, right? Beckford मारा था. yeah. फिर एवर्टन ने उनको उसको भी लिया. इनका I think Paritosh camera is stuck. I think लीड्स का. अच्छा प्रत्युष भाई आ रहे हैं. लीड्स का जो हमारा है ना गेम, आई डोंट थिंक कि हम लोग बहुत लोगों ने देखा है लीड्स का गेम. आई थिंक आई हैव सीन वन लास्ट गेम ऑफ लीड्स वर्सेस यूनाइटेड बैक इन 2003-4, like way back. That was the only match I saw before they came back into the Premier League. Like ठीक है कप मैच हुआ था बीच में एक, बट प्रीमियर लीग का मैच नहीं हुआ ना बीच में. आई थिंक मोर देन 15 years 16 years. So yeah, so वो फायर वो खत्म हो जाता है. लाइक वी आर वे वे अबव देम. हम लोग इतना खराब खेल रहे हैं फिर भी 5-6 ठोक के आते हैं उनको. लाइक दैट्स द ड्रॉ भी डिफरेंस इन किया द था लेवल्स. हाँ, बिकॉज लास्ट दे टाइम एलन रोड पे ड्रॉ हुआ या था. एलन ड्रॉ पे ड्रॉ हो गया था. दैट वाज अ गुड रिजल्ट फॉर अस बिकॉज दैट इज नॉट एन इजी प्लेस टू गो, स्पेशली फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. नॉट If एन we इजी draw प्लेस टू now, गो. we won't be in top four. I don't think we will draw because Leeds are going to go for a win. They have to get a win. They are in the relegation battle, so they will want to get a 3 point. Last season वो बहुत safe position पे थे, so they played out that game. And at this point of time, they are not in a good run of forms. एक मैच जीते हैं last, but still not good in a good run of form. उनका अगर आप देख लो तो उनके साथ इशू ही वो है कि they go man to man. अगर आप मैन टू मैन जाते हैं ना तो आपको अपने प्लेयर को पकड़ के रखना पड़ता है. पिछला मैच अगर हम देखते हैं तो मैकटोमिनी को फिलिप्स और आई थिंक देयर वाज अनदर पर्सन, आई डोंट रिमेंबर द नेम, आइदर ऑफ देम वेयर टू टेक केयर ऑफ मैकटोमिनी. एंड एवरी टाइम मैकटोमिनी पास द बॉल दे वेंट विद द बॉल. जहां पे बॉल गया वो उसको स्क्वीज करने के लिए गए. ब्रूनो वाज सिटिंग बिहाइंड. ब्रूनो को एक बॉल आया, वन पास एंड द होल मिडफील्ड इज ओपन. कोई नहीं है आपको पूरे मिडफील्ड में. तो जब आप मैन टू मैन मार्किंग जैसे करते हैं तो आपका एक प्लेयर है, उसके साथ एक प्लेयर लगा हुआ है. दिस प्लेयर गोज इन, यू गो इन. दिस प्लेयर गोज आउट, यू गो आउट विथ हिम. सो अगर ये प्लेयर अंदर जा रहा है, आप अंदर गए, ये प्लेयर ने बॉल कहीं और पास किया, आप बॉल को अगर कवर करना चाहोगे ना, ये प्लेयर आपका पूरा ओपन हो गया. yeah. तो ही कैन मूव एनीवेयर अराउंड. और अगर इसके बाद इसको अगर कवर करने के डिफेंडर आता है तो आपका पूरा का पूरा बैकलाइन खाली हो जाएगा. तो डिफेंडर कैन नॉट कम देन कवर हिम. So that is the problem with man marking. इसीलिए pressing is good for them, but pressing के साथ वो man marking करते हैं. That's something that City doesn't do, Liverpool doesn't do, because they overload in an area and squeeze it. These people go with pressure and man marking, so you can't do both at the same time. क्या कमेंट आया है बॉस. प्रत्युष जी आप एकदम अरे वो भाई ऐसा कुछ नहीं यहाँ है. आरआर की तरह बात करता है, बाद में पूरा दिन आरआर करता है वो. exactly. To all the fans who are live, we are glad you're here. So guys, I'll take a little pause here.
we have a very special announcement. So tomorrow, it's the birthday of Manchester United. 112 years. Old 1910 Trafford. में Old Trafford came into Yeah. existence. Uh, yep, sorry, my bad. यूनाइटेड का बर्थडे नहीं Uh, है भाई. It's like Old Trafford became our home. Newton Heat was in 1800s as well. So we have a very 80s special man. video. We have a very special video for you guys. It will be launched after midnight, after this streaming finishes. Please do check it out. You will really like it. Coming back to the Leeds game, एक जो सटल मैंने नोटिस की है चीज कि whenever they are at home and whenever they are in an away match, home पे they generally are more compact as compared to away games. Who should take this one? मुझे कमेंट पे हंसी आ रही था यार. मैं कमेंट पे कंफ्यूज हो रहा था. Paritosh bhai, you go. Paritosh bhai, you go. अब परितोष ही बोलेगा. Why are Liverpool fans in our comments now? ओ Why हो are there हो Liverpool fans here? हो सिद्धार्थ ने दे भी दिया. Go watch Klopp. Go watch Klopp. Yeah, I अरे actually chill. think I agree with you. कि Leeds जब home पे होती है, then they are very compact as compared to away. I guess that has a lot to do with the fact that they know that they have to get out there. They cannot defend versus big teams away from home, especially when it comes to basically like the cities and the Liverpools and the Manchester Uniteds. So they kind of try to take the game to them and try to exploit the home teams because everybody at home is going to play a more expansive game, right? So I think that is what their idea is. While खुद के home पे होते हैं तो they know that they can control the game a little bit better if they are more compact, and I think that is how they kind of manage it. Uh, I would say कि last time when we went there, I think Bielsa already knew what happened earlier, and he did not want it to be repeated at home. So he kind of shut down shop versus us. Now this Yep. season as well, I think I expect that again. To be really honest, he is going to be very compact. He is not going to give us space. And Leeds, I agree that Leeds needs those points as much as we do for a completely different reason. But I still feel that Leeds will not come out to play. They will come out to be compact. They will come out to stop us. And the only difference this year is that हमारा defense इतना अच्छा नहीं है counters पे, and we are susceptible to conceding. Yeah. And with the likes of Rafinha and David James, not David James, James, Yeah. R. James, Daniel James. So Daniel James. they are going to play that game. They are going to play that game. I expect them to play on the counter, be compact when without the ball, and try to get us out of those spaces and isolate the likes of Maguire and Varane on counters because James has the pace and James has the stamina to run that 90 minutes at defenders. So I think we will have that issue with them. Let's speak stats. 1 minute सिर्फ before you highlight a comment that is pretty controversial. थोड़ा हो सकता है discussion अच्छा हो सकता है. Controversial. There is no discussion. I know. Ilanga all the way. अरे हाँ हाँ ठीक है. Okay, so the stats basically for 21-22, they've played 11 games at home, lost 4, drawn 4, won 3. Played 12 games away, lost 6, drawn 4, won 2. They won more home games, and they've lost most away games, and they've conceded most goals away. So it's kind of last season they conceded a lot at home, but this season they've been better than before. भले टट्टी है but कम वाली है. हाँ जी, एलांगा और रैशफोर्ड. So let's Sandeep will come to this. आपने एक और wing backs का crosses का बात किया था. We'll come to it as well. Let's talk about your predicted starting 11 for Manchester United. We'll start with Pratyush. David De Gea in the goal. Nobody is taking that place. I think we'll go with the back four of I think Dalot. so. One more news: Tom Heaton is also out due to injury. So yeah, the guy is safe. Dalot, Varane. I think we will still persist with Maguire.
Even though I don't want to, I would rather have Lindelof over there, but it's okay. Maguire, and I think Telles will be back this time. And in the midfield, we will go with the same three: Pogba, McTominay, and this Bruno. And Bruno. front three is going to be Elanga, Rashford, Sancho, and Ronaldo. Rashford will be on the bench. Sorry. So I think that's how it's going to be. And I think this time, if Elanga is playing, I think he should be playing on the left side. I don't want him on the right side क्योंकि वो कंट्रोल नहीं है अभी उसके पास on the weaker foot कि वो दोनों साइड से वो खेल सके. वो फिजिकली बहुत हरास होता है उससे कभी कभी डिफेंसिवली भी. तो वो एक चीज है. अग्रीड बट जो अटैक में बात करें ही व्हेन ही वाज प्लेइंग ऑन द लेफ्ट वो बीच में आके ही स्कोर्ड हिज गोल राइट इज ओनली प्रीमियर लीग गोल दिस सीजन ठीक है Yeah. एंड राइट से दिस टाइम लास्ट मैच में जो अटैक किया वेयर ही वन द रेड कार्ड फॉर अस व्हिच बेसिकली वन अस द गेम सो अटैकिंग वाइज दोनों पे ही अटैक्स द बॉक्स वेरी वेल वो सो ठीक आई है डोंट बट सी अ वो ह्यूज डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू वो वो ऑन व्हिच वो विंग इशू नहीं ही है ना. प्लेज उसके साथ वो इशू नहीं आता ना. इशू ये आता है ना कि आप अगर राइट फुटेड है तो आप इन्वर्टेड विंगर बन गए. व्हेन यू आर इन एन इन्वर्टेड विंगर तो फिर आपका मेजर जो आपका ये होता है ना स्ट्रेंथ वो है कटिंग एंड शॉट. और फिर आप उसमें एक एक एक्स्ट्रा बिट अपना डालते हैं कि आप कटिंग करने की जगह पे आप बाहर चले गए और वहां से विपिंग करते हैं बॉल. सो इफ बोथ आर देयर इट इज डिफिकल्ट फॉर द डिफेंडर टू जज कि आप क्या करेंगे, कटिंग करेंगे या बाहर जाएंगे. बट अ वेरी वेरी यंग प्लेयर लाइक हिम वो पहले इंस्टिंक्ट्स पे जाते हैं. और जब उसका पहला इंस्टिंक्ट होता है कि कटिंग एंड शॉट. तो अगर ये राइट विंग पे आ जाता है तो उसका शॉट टेकिंग एबिलिटी तो खत्म हो गया क्योंकि वो Yeah. लेफ्ट फुट पे आएगा नहीं. उसका पहला आएगा कि हम राइट पे जाएंगे. आई विल गो आउटसाइड एंड आई विल पुट इट. तो शॉट तो ले नहीं सकता, वो क्रॉस डालेगा. बिकम्स वेरी वेरी प्रेडिक्टेबल कि वो क्या करेगा. जनरली वहां पे जो रेड कार्ड लिया था दैट वाज बिकॉज वो एक मोमेंट था जहां पे वो बॉल जीतने का कोशिश कर रहा था. ही वाजंट गोइंग थ्रू विद द बॉल, रन कर नहीं रहा था बॉल के साथ, बॉल के लिए जा रहा था वो. दैट इज अ डिफरेंट स्पेस ऑफ द दैट डिफरेंट मोमेंट ऑफ द गेम. वो मोमेंट हर बार नहीं आएगा. फ्रॉम द लेफ्ट ही कैन कटिंग. अगर वो बाहर भी जाता है ना स्टिल ही विल हैव चांस टू, क्योंकि उसको एक्यूरेसी नहीं चाहिए. ही हैज टू पुट द बॉल इन द स्पेस जहां पे प्लेयर आपके पास रहे. दैट इज मोर अबाउट स्पीड एंड पावर, लेस ऑफ एन एक्यूरेसी. और राइट फुट में अगर आप खाली वहां में तो एक्यूरेसी के लिए जाएगा, वो मिस कर सकता है चांसेस. सेकेंड थिंग उसके साथ ये रहता है जो सेम चीज विथ रैशफोर्ड. रैशफोर्ड का भी अभी वही चलता है कि उसको राइट विंग में खिलाते हैं तो वो आप देखोगे कि वो शॉट भी लेता है तो विपिंग करता है अपने उस एंगल से. वो बाहर नहीं जाना चाहता है, वो वहीं से शॉट ले लेता है अराउंड द डी. क्योंकि वो अगर अंदर घुसेगा तो वो एंगल कट डाउन हो जाएगा, फिर वहां से आप शॉट नहीं ले सकते हैं राइट फुट पे. और लेफ्ट फुट उसका अच्छा है नहीं. So that's why I want him on the left. क्योंकि Sancho on the right wing can go across and have a great cross in. और वो अंदर आके फिर वो बॉल प्ले करके So अंदर Sancho is एंटर भी playing कर better सकता है. from the left. Yes, he is. क्योंकि वो he can play on both wing ना. उसके उसका ये इंस्टिंक्ट नहीं है कि हमको गोल स्कोर करना है. ही इज नॉट अ गोल स्कोर, इज आउट एंड आउट विंगर. जब आप आउट एंड आउट विंगर होते हैं ना तो आपको दो तरह से यूज किया जा सकता है. एक इनसाइड विंगर जो कि आपका जैसे अभी लेफ्ट विंग पे खेल रहा है, और एक आउटसाइड विंगर जो कि वो राइट विंग पे खेलता है. बोथ हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट्स. अगर वो इनसाइड इनसाइड विंगर खेल रहा है तो वो कटिंग करेगा या बाहर जाएगा. आउटसाइड विंगर है तो वो क्रॉस के लिए बेसिकली जाता है. वहां से वो उसका असिस्ट आप देख लो बुंदेसलीगा में अगेंस्ट बिग क्लब्स, उसका असिस्ट ज्यादा है देन हिज गोल वहां पे. यहाँ पे उसका देख लो कि गोल्स असिस्ट से ज्यादा आएगा क्योंकि वो लेफ्ट विंग पे खेल रहा है जहाँ पे शॉट ले रहा है. Fair enough. Udit, your starting 11. I'll, of course, Deha to है ही. I'll go with Dalo, Lindelof, Maguire and Shaw. ठीक है. खेलेगा शो. खेलेगा शो. देख लेना. I'll go for McTominay, Pogba, Bruno, and I'll go with Sancho, Ronaldo, Elanga. ये रहेगा Ritush, मेरा. your starting 11. Yeah, this should be good. I think more or less the same. Taha at goal. Right now, I think he's number one and nobody's going to displace him. Dalot, Varane comes back for me. Maguire and Shaw. I think Shaw will start for sure. Uh,
मिडफील्ड इज समथिंग जहाँ पे मैं थोड़ा डिफरेंट जाऊंगा. आई विल गो विद फ्रेड एंड मैकटोमिने rather than Pogba, to be honest. Uh, with the front four of Bruno, Elanga, Sancho, and Ronaldo. I just feel के McTominay जो Rangnick के under the role, he is playing that 8 role where he is given the freedom to go ahead. And I mean, all of his best goals from there, from that going ahead, has been against Leeds. Like he has amazing goals versus Leeds doing that. And I think Pratyush explained it really well कि जो man marking वो लोग करते हैं midfield में. McTominay has that ability to move forward and वो forward role में अच्छा है वो जब when he has to move forward, not moving back, moving forward is good. So I don't want him at DM. Pogba के साथ होगा तो फिर वो problem आ जाएगा कि he will have to sit in while Pogba goes ahead, and I am not sure कि Pogba can do the same way what McTominay does. Pogba has different role, has a different skill set. So I would say Fred and McTominay would be a better fit for a team like Leeds जो man to man mark करती है. And then the front four as the same. I would still keep Elanga on the right. I understand what Pratyush is saying and why it is important to play him on the left. But finally, we have Sancho getting into form, and he's one of the only few players who is consistently doing better every game. And since he's on the left of here, I don't want to break what is already going well. Like right पे move कर दे and we might even stop playing. Like we just everything Yeah, breaks down and yeah, we are out of the game. तो वो बिल्कुल. हमारा लेकिन है इसमें ही. तो तुम That में that आए is लौंडा तो a problem with us. इधर ही कंटिन्यू रखो यार. For हाँ me वो also, एग्जैक्टली एटलीस्ट एक बंदा तो अच्छा खेले उसकी गारंटी है. यार सही है. I agree. So I'll go with the same lineup which Ragnick went before Varane got illness. I think if Varane is fit, he should start. No calls about it for me. So Varane and Maguire because उसको मनी एंटाइटलमेंट कैप्टन का वो बोल दो, कैप्टन टैक्स बोल दो या कुछ भी बोल दो, because of which he plays. I don't think Maguire deserves to start, but he'll play. So Maguire, Varane, I'll still go persist with Dalot, and Luke Shaw will play again. Midfield में I'll go with McFred as कोई mentioned नहीं, by मीट Pratyush मीट bhai. कंटेंट देगा. शो कंटेंट देगा अपने को. डोंट वरी. Maguire से ज्यादा hopes है. With Bruno, and I'll start Elanga. And the good thing about Elanga and Sancho is they're both very flexible. They can change wings during the match. So I think कोई भी कहाँ भी start करे, it's slightly irrelevant for me because forward line में Ronaldo is a huge name, but Ronaldo से consistent जो भी रहे हैं, that's Sancho and somewhat Elanga. So when your players are performing good, they should start, and it doesn't matter where they're starting. इतना ज़्यादा मेरे लिए matter नहीं करता है in terms of wings. Uh, but I would prefer Sancho on left, Ilanga on right, where they can interchange, and Ronaldo will start. There is no other striker available with Manchester United, so Ronaldo is going to start, and hopefully he'll score. A उसको good स्कोर करने good के लिए form of match. he needs chances from wings जो अपन बार बार डिस्कस करते रहते हैं. I बहुत I से. think I think इसमें easy होगा क्योंकि because the Leeds are not good on set pieces, corners खासकर. तो हमारा जो पूरा सीजन खराब गया है, maybe we can redeem ourselves in this and score one or two from corners. What are your अभी तो thoughts एक on चांस that? मिल जाए वो भी बहुत है. From corners अभी if we have a goal shot on target, I think that would be an achievement right now. भाई जब कॉर्नर इस आता है गोल ना, तो मेरे I को, think मेरे लिए अभी ये अचीवमेंट है इस सेट ऑफ प्लेयर्स की. कॉर्नर आ रहा है तो पहला मैन क्लियर हो बस. गुड कॉर्नर, द फर्स्ट मैन क्लियर. दैट्स माय ओनली क्राइटेरिया राइट नाउ. That is more happening when Rashford is taking the corner. वो वाला player भी उसे first man भी clear नहीं होता है. सो बात करते हैं क्रॉसेस की. जो पहले कमेंट आया था, व्हाट अबाउट फुल बैक्स? मतलब डेलो, एज मच एज ही इज हाइप्ड फॉर हिज क्रॉसिंग, ही ओवरहिट्स हिज क्रॉसेस बाय अ माइल. या ठीक है, जहाँ कोई पहुंच नहीं पाता है. सम ऑफ देम आर इन द स्टेडियम, सम ऑफ देम आर इन द मार्स. तो डेलो का क्रॉसिंग जो इतना अच्छा बोला जाता है, ही इज नॉट क्रॉसिंग वेल. Okay, other attributes I'm not talking about here, just I'm talking about उसका crossing. And Luke Shaw का एक season इतना प्यारा, and this season अगर Williams यहाँ पर होता तो he would have started over Luke Shaw.
इतना ल्यूक शॉ इतना का खराब खेल रहा है वो। ल्यूक शॉ इज नॉट नोन फॉर हिज क्रॉसिंग, वो ड्रिवन बॉल्स प्ले करता है इन द चैनल, वो क्रॉसेस के लिए नहीं जाता है। टेलिस इज मोर फॉर क्रॉसिंग द बॉल इन द बॉक्स देन ल्यूक शॉ। ल्यूक शॉ या तो बॉल कैरी करेगा फॉरवर्ड, या तो वो ड्रिवन बॉल क्रिएट करेगा। जैसे इफ यू रिमेंबर दैट मैच व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर इंग्लैंड एंड रैशफोर्ड मेड अ रन फ्रॉम द डीप, बीच से गया था एंड ही जस्ट पुट अ क्रॉस इन हिज पाथ और वो लेके चला गया। सिमिलर वे में वो एक बार यूनाइटेड के लिए भी किया है फॉर रैशफोर्ड। सो ही इज मोर यू नो पुटिंग द फिजिंग passes inside in the channels, नकल उसके लिए बॉल गलत मारता है है वो, पूरा। रैशफोर्ड नकल बॉल मारता है, उसको पता नहीं क्या ही भूत चढ़ा हुआ है वो। नो नो, आई बहुत एम नॉट सारे टॉकिंग अबाउट लोग। रैशफोर्ड, ये शॉ के बारे में बात करो मैं। अच्छा शॉ। शॉ के बारे में, सो ही इज नॉट शॉ नोन फॉर हिज क्रॉसिंग, क्रॉसिंग के लिए नहीं है वो। आई नो, बट वो बहुत, डोंट यू थिंक वो थोड़ा ही शुड टेक 4-5 स्टेप्स मोर बिफोर टेकिंग अ क्रॉस? आई थिंक ही इज रियली डीप व्हेन ही टेक्स हिज क्रॉसेस। डालो भी, उसके आई साथ मीन। इशू इशू क्या है ना, आप अगर ये देखो उसका रनिंग देखो, मोस्टली वो क्या करता है कि डी के एज पे आके वहां से अंदर रन करता है। इफ यू हाँ वांट टू क्रॉस ना, आपको आउटसाइड जाके वहां से फिर आप एग्जैक्टली क्रॉस कर सकते हो। एग्जैक्टली तो आप एग्जैक्टली। हर बार अगर डी के अंदर से रन बनाओगे तो आप क्रॉसिंग के लिए आपके पास मौका कहाँ आएगा? वही वही वो रेंज ही नहीं मिल पाएगा जो क्रॉसिंग का होता है, फिर उसको पता भी नहीं चलता कि एग्जैक्टली उसको कितना पावर डालना है अपने क्रॉस में। दैट्स द इशू, गो मोर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द विंग, हाँ। दैट्स हाउ यू विल स्ट्रेच द प्ले एंड देन पुट इन अ क्रॉस। नाइस stretch the वन। game. जैसे 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 वो सीजन जब अच्छा हमारा लेफ्ट विंग चल रहा था लास्ट लास्ट ईयर, तो उसमें शॉ वाज गोइंग आउटसाइड क्योंकि हाँ रैशफोर्ड वाज पेनिट्रेटिंग इनसाइड, वो या कटिंग कर रहा था तो शॉ के पास वहां पे स्पेस ही नहीं था। सो या ही वाज फोर्स्ड टू गो आउटसाइड, तो वो उसका अच्छा सीजन गया। अभी यहाँ पे वो बंदा नहीं है, ऐसा कोई बंदा नहीं जो कटिंग कर रहा, तो वो बार बार एक ही एरिया में खेल रहा है, ही इज नॉट गोइंग आउटसाइड, तो उसका बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गया वहां पे। परितोष, I think थॉट्स ऑन वो इट? तो आपकी बात सही है. I think शॉ का वो प्रॉब्लम है. And also just to say कि Dalot I don't think is a good crosser. I don't think he has ever been a good crosser. I have no idea कहाँ से ये myth बना है कि he can cross. Because I'm pretty sure कि जब हमने sign किया था at that point of time as well, everybody was saying that he's good at passing, he's good at going forward. His weakest part is his crossing. And when you see him play, you can see where that it's kind of true. कि वो क्रॉस करता है तो यू जस्ट नो कि सामने वाला फुल बैक ही वापस बॉल लेने वाला है एंड वो बॉक्स में कहीं पे नहीं आने वाला है इवन दो यू हैव सो मेनी पीपल अटैकिंग दैट. तो इट इज अ प्रॉब्लम विद हिम. इट इज जस्ट दैट आई वुड आल्सो से कि अगर दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता तो आई थिंक समवन एल्स वुड हैव कम इन देयर बिकॉज Dalot does look vulnerable going back as well at times. But then our other option is a guy who just does not go forward. So then right now I think with Dalot it's just that we are keeping him because at least वो आगे तो जाता है. Like he's there in the final third. He can pass 5. He can make 3 passes without letting the ball go. So I think that is one of the reasons he's there in the team. Shaw, I have no idea. I love him. I think he's a wonderful player. उसके पास सब है. Like he can run, he can pass, he can cross. But पता नहीं उसका जैसे बोला like hot and cold बहुत होता है और ये सीजन he has been very cold. Like he's lucky कि टेलेस है टीम में and विलियम्स नहीं है and टेलेस can't depend for his life. वरना आई एम 100% श्योर कि थोड़ा भी अच्छा डिफेंडर होता तो उसने रिप्लेस कर दिया होता. 100% रिप्लेस कर दिया था शॉ को. But it's just that टेलेस cannot defend. Like आप भूल जाओ. You would rather play him at left wing than left back because it's the same when he's playing at left back. संदीप भाई वही चलेगा, काउंटर अटैक पे ही खेलेंगे क्योंकि वो प्रेस करते हैं, अपने पीछे स्पेस छोड़ते हैं। दैट इज द बेस्ट वे टू ऑक्यूपाई दैट स्पेस एंड यूज दैट स्पेस। काउंटर अटैक इज द बेस्ट वे टू गो प्ले अगेंस्ट लीड्स। जहां तक ये शॉ का बात है ना, जो परितोष भाई आप बोल रहे थे, सब कुछ सही है उसके साथ, लेकिन उसका ब्रेन फेड इतना होता है ना, डिफेंसिव पोजीशंस आउट ऑफ पोजीशंस रहता है वो। और सेम 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 सिचुएशन इसके साथ भी है, डालो के साथ भी है, क्योंकि मैं लास्ट मैच देख रहा था, एक राइट बैक को मोस्ट प्रोबेबली राइट साइड का एरिया को कवर करना रहता है, वो डीएम के पोजीशन पे आके खड़ा है व्हेन वी आर नॉट हैविंग अ टोटल कंट्रोल ऑफ द बॉल। भाई अगर आपके पास बॉल का कंट्रोल नहीं है और आप दूसरे के हाफ में एक 20 सेंटर में आके आप खड़े हो, आप पूरा का पूरा राइट साइड खोल के बैठे हो, तो उसमें अगर काउंटर पड़ेगा तो कौन बचाएगा आपको? और अगर आप देखोगे आप पिछला मैच ब्राइटन का, तो इन 3 passes दे वर अटैकिंग डैरोस साइड वेरी Yeah, वेरी true. इजीली। 100%. हाँ, क्योंकि उनको पता था And कि I think डैरो वही का इशू है पोजीशनिंग अपना. वो अंदर आता है। हाँ
Yeah, I agree. The right wing, like the major areas of our flaws, I think, is the right back, Dalo का area पूरा, and जो left inside channel है, the channel between Maguire and Shaw, क्योंकि वहां पे ना Maguire करेक्ट. को पता है क्या करना, ना Shaw को पता है क्या करना, and Maguire फिर क्या करता है, 2 step आगे ले जाता है, and he like मगवायर He is गड़बड़ पीछे खाता बॉल done. है. चला गया, he cannot cover, like he हाँ. does not have the pace or the recovery skill to do that, and I don't know why he does that, because he is good at defending space, like he is good at अरे it, like क्या, he did it last time as well. कल आप ब्राइटन का मैच देखोगे तो एक तो हाँ बार हुआ था कि like he did not go ahead, he just stood there and he just asked the player to put it wide, और वहां से अटैक आया, तो इट्स इजियर टू गो एंगल कट डाउन करना, तू क्यों 2 स्टेप आगे ले रहा है, तुझे पता है शॉ इसको रिकवरी नहीं कर रहा है, तो वो इनसाइड लेफ्ट चैनल टू डिफेंड करने मत जा, यू डू नॉट हैव द पेस, यू डू नॉट हैव द रिकवरी, तुझे कट कर दिया, गेम खत्म हो गई उधर, फिर वराना हो या लिंडलॉफ हो, वो अकेला घूमने वाला है पूरा 20 यार्ड स्पेस में, कुछ करने के लिए जगह नहीं होगी उसके पास, तो दैट इज द So प्रॉब्लम, दोस 2 मेजर एरियाज. उसको किसी ने on बोल दिया on होगा यू on आर the गुड एट same द lines, बॉल, तो वो सोचता है कि आगे बॉल जीत के वहीं से लेके मैं चल जाऊं और जाके स्कोर कर दूं गोल. He wants to be Beckenbauer. You are not Beckenbauer, bro. You are not even Rio Ferdinand at this point. Try and just defend. Just defend your space. बाद में सब देखेंगे ये सब. Like once you are in form, you step out. We know that you are good at stepping out. We know that you are a good passer. But अभी तेरे से basic चीजें नहीं हो रही है. Why are you trying to do those extra hard things which you need confidence to, which you need that momentum to do? तो वो मत कर अभी. Like let it go. Don't do that. so we have seen that consistently. Last game में भी एक moment था where last player था, first player था, if we talk about the attack, uh, उस पे मगवायर अगेन स्टेप आउट किया टू प्ले हिम ऑफसाइड, एंड ठीक है कवर हो गया, बट देन इट वाज द सेम मिस्टेक कि आप स्टेप आउट कर इस रहे हो, आपका लाइन वो सेम नहीं है, और हर बार आप ऑन साइड खिला देते हो, कोई ना कोई एक प्लेयर इस थोड़ा पीछे रहता है. इस हाँ शॉ, हाँ ये प्रत्युष. हर्बर्ट शॉ है. वो ऑन I साइड खिलाने agree. का अभी प्लेयर मैं वही शॉ बोलने है. वाला था. और उसका रीजन मैं I बताता agree. हूँ, वो रीजन क्या होता है. वो रीजन मैं बताता हूँ क्यों ये होता है. जब आप एक 10 साल के बच्चे को डिफेंडिंग सिखाते हो ना, जो खासकर फुल बैक रहता है, सो यू टेल हिम कि कुछ भी हो जाए, तुम्हारा जो जिस प्लेयर को आप मार्क कर रहे हो वो आपके सामने रहना चाहिए. सो यू डोंट पुट हिम ऑन योर शोल्डर्स. फिर बाद में फिर बड़ा होता है तब उसको सिखाया था कि ऑफ साइड ट्रैप कैसे खेलना है, किस तरह से आपको स्टेप अप करना है, स्टेप डाउन करना है. ये बंदा अभी भी 10 ईयर वाले बेस पे है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा प्लेयर मेरे सामने होना चाहिए. So तो अगर आप Maguire takes a Sadiq Bhai step is forward saying for Maguire sure. takes the step forward to cover for Shaw's lack of positioning. Agreed. So he has to choose between rock and hard plays. Inside goal से खेले या wing से, cause Shaw and DM has already fluffed the space. ये I बात भी सही है agree with क्योंकि it. मैकटोमिने सही भी बात नहीं है मूव ये. करता है, वो भी कवर नहीं करता है स्पेस को. पूरा डिफाइन कर दिया मोहम्मद भाई ने, बहुत बढ़िया, वेल नहीं, सेड. एक्चुअली कल लास्ट मैच में ब्राइटन वाला मैच का ही एग्जांपल है. आई डोंट रिमेम्बर हु द प्लेयर वाज, बट ऐसा ही था. शॉ was out of position. You could not see Shaw. Okay, and the player who had the ball in front of Maguire. Now, either he had to step up because वो सामने आ रहा है प्लेयर, और ही हैड टू स्टे, पर लेफ्ट हैंड साइड उसके लेफ्ट में कोई नहीं था, सो देन ही वाज एक्चुअली इन अ वेरी बैड प्लेस एंड द बॉल वेंट टू हिज लेफ्ट एंड देन ही वाज बीटन फॉर पेस. अब उसमें मैगवायर कुछ कर भी नहीं पाता, एंड आई डिफेंडेड हिम. आई रिमेंबर डिफेंडिंग हिम इन द ग्रुप विथ पीपल. आई टोल्ड हिम दैट इट इज नॉट हिज फॉल्ट. जो बात हुई थी वो डीएम नॉन एग्जिस्टेंट, एलबी नॉन एग्जिस्टेंट, तो सीबी क्या करेगा, सेंटर बैक करने क्या वाला है. आप ऐसे खड़े हो, आपको पता है आपके लेफ्ट में भी आप बीट हो जाओगे, आप स्ट्रेट में भी बीट हो रहे हो, तो आप करोगे क्या, यू आर देयर. बट देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स जब मैगवायर ऐसी मिस्टेक्स करता है जो नहीं होनी चाहिए. तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, लाइक people around him are not helping, but he's also not helping himself, so it's like it's not helping overall the team and Maguire himself, I would say. So हेलो a प्रैग भाई. lot of Paritosh fans here. Prayag is new here. Just a word of warning, all of these people are here to slander me, so yeah. अरे उन्हें भी लाएंगे एक दिन. They'll know what दो it चार takes to और पाइपलाइन में है. हाँ, फैंस के लिए तो है भाई, बनाए फैंस के लिए, तो लाएंगे.
हैप्पी एनिवर्सरी प्रयाग इफ है तो नहीं है तो भी। आई डोंट बिलीव सो कमिंग टू द स्कोर लाइन प्रेडिक्शंस क्या लगता है we'll start with Paritosh bhai very very happening today for you It's Leeds. I will always expect a 3-0 win. I want to beat them and I want to beat them convincingly. we'll take a comment in between I've cursed Mago the most but watching replays I find major fault is with the team and then he does an additional blunder which makes it even worse सादिक भाई ये तो मैंने पहले ही बोला है कि वो डीएम का जो कवर नहीं है ना, दैट एक्सपोजेस मैगवायर इवन मोर। वो एक इशू है, और खाली मैगवायर नहीं, वो लेफ्ट बैक को भी एक्सपोज करता है, क्योंकि जैसा आपने बोला ना, इफ मैगवायर इज गोइंग अप, शॉ आउट ऑफ पोजीशन है, शॉ जनरली इनसाइड लेफ्ट में रहता है उस पोजीशन पे, एंड दैट इज अ टाइम जब आपका डीएम शुड नो कि स्पेस को कैसे कवर करना है यहाँ पे। तो वो जनरली डीएम इस पोजीशन में कवर कर लेगा, ताकि इफ मैगवायर मिसेस देयर इज समबडी एल्स टू कवर। तो हमारे पास तो डीएम ही नहीं है, तो क्या ही बात करें मैगवायर के बारे में आई या थिंक किसी के बारे में। प्रत्युष शॉ का थोड़ा इवोल्यूशन हुआ है कि वो इनसाइड आना शुरू किया है पहले पोजीशनिंग पे वो अभी वो ये कवर करने की ट्राई करता है कि दोनों साइड से बीट ना हो पहले जब वो वाइड रहता था तब तो डेफिनेटली बीट होता था इसलिए आई अब तो थिंक वो थोड़ा पोजीशन भी चेंज नहीं किया है रहता उसने है भाई, अब तो रहता ही नहीं है टैकल करने के लिए या डिफेंड करने के लिए, तो फिर क्या फायदा उसका। नहीं नहीं अब ना वो 15 यार्ड आगे रहता है ताकि उसको ये ब्लेम ना किया जाए कि भाई तू पोजीशन पे नहीं था नहीं नहीं तू तो अटैक कर रहा था थैंक यू विवेक was here Sandeep says a 2-1 win for Manchester United. आई Udit, थिंक what's your टू prediction? वन I think we'll keep a clean sheet. 1-0. Clean sheet. मैच चालू होने से पहले या बाद में? ठीक है ना, चल जाता है यार कभी कभी। I think this will be the game for us to keep a clean sheet. 1-0. Shaw, सादिक भाई she's like an insecure girlfriend the way he sticks to Maguire while defending spaces. Kunal says we are winning 3-1 tomorrow. McTominay and Sancho on the 3-0. score sheet. आई थिंक वी विल विन Uh, 2-0 या 2-1, नॉट 2-0, 2-1। आई थिंक इट विल बी अ केजी मैच। I think it will be a KG match, but then we'll come out good. We'll finally score. एक बहुत favorite word है सबका buzzword, law of averages. So finally, I think the XG's God will favor us towards good score line. And I don't expect us to keep a clean sheet. I'll go with a 4-2. Somil ने वापस कवानी का पूछा था। We've discussed that Somil. I think it's becoming a recurring issue with him. I don't know. ये सीजन तो चलाना ही पड़ेगा। चल ही तो नहीं रहा है. चलाना ही पड़ेगा, वही तो है ना। अब क्या करें? Very optimistic. सादिक भाई फ्रेड कैन बट विल ही, क्वेश्चन भाई वो है। उसने जिस हिसाब से लिखा है वो सोचो, वो खुद नहीं बोल रहा मारेगा गोल। द लेजेंड फ्रेड। नहीं नहीं, मैं उनको जानता हूँ, ही इज सेइंग इट्स हिज प्रेडिक्शन, फ्रेड विल स्कोर। अरे वही। बट Nice. आई डोंट Sadiq, bhai, you have predicted 3-1. Okay. I just have one question. On which side the Fred will score? He's a legend. उसने वो मेंशन नहीं किया, बहुत स्मार्ट है वो 1 गोल जो है वो भी हो सकता है और 3 गोल भी हो सकता है। वेल डन मोहम्मद भाई। रॉन्ग एक्सटेंशन वाज गिवन टू कवानी। नहीं भाई, Yeah, कुणाल भाई, Pratyush, मैंने go मुझे on. नहीं लगता है कि रॉन्ग एक्सटेंशन था, बिकॉज रोनाल्डो और एनी स्ट्राइकर वाज नॉट इन द पाइपलाइन। वी नीडेड अ स्ट्राइकर एट दिस पॉइंट, दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो सही था। ये डिपेंड करता है ना कि रोनाल्डो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द विंडो अचानक से एक मौका मिला एंड वी वेंट इन एंड वी गॉट हिम, सो एक्सटेंशन वाज राइट, वाज नीडेड, दैट Hindsight टू बी में तो we डिसाइडेड shouldn't आफ्टर have दिस पेपर। signed Maguire as well.
but that I would cat is out disagree of the there. bag. I think he's still a very good defender. Last year I think he was one of the top 3 defenders, and I will still go to the hill saying कि अगर उसके पास अच्छी टीम होती तो it would have been better. I know he's making mistakes, but ए भाई DM and निकालो LB इसको, का issue ये बहुत बड़ा निकालो इसको, इसको निकालो रे He's चैट a से। good defender. He's a good defender, and I think he will come good. मगवायर अच्छा बनेगा. I am there. I am with him on it. वो एक दिन अच्छा बनेगा Hopeful, वापस, and hopeful. he's not मैं worth तो it. भाई, मैं मेरे सब दोस्तों को बोलता हूँ ये I गांडू agree, वर्ल्ड but कप he's फाइनल a में good गोल defender. मारेगा, मगवायर वर्ल्ड कप फाइनल में गोल मारेगा, देख लियो तुम लोग, ऐसा भी बोल वर्ल्ड कप फाइनल खेलेगा? मैं पहले बोल तो रहा हूँ, क्वेश्चन ये है। बोल रहा हूँ खेलेगा भाई, यूरोपा लीग फाइनल नहीं खेला था. Meat इतना will बोल say रहा खेला good होता तो things शायद about जीत जाते. Marshall, but set fixings in ending. Kunal, I am totally with you. Marshall is the best striker in the world that shouldn't play for Manchester United. Sevilla में 15 गोल मराओ. Let Barcelona take him another Europa League team. Let us get money for him. That's the best contribution he conference. can ever do. Barcelona is a conference level team. Prague isn't as optimistic as us here. भाई बहुत दुख Feeling होगा a ये draw is फाइनल coming में, in. बहुत दुख होगा, बीटी हो जाएगी। मैगवायर हर गेम लीड्स को में तो हराना अच्छा है. बनता है. मैगवायर अच्छा कौन सी गेम में अच्छा बनता है? अरे तू समझ नहीं रहा, अच्छा बनता प्रेस है कॉन्फ्रेंस में वो नहीं, आफ्टर द मैच. अच्छा बनाया जाता है ना उसको, हर अच्छा गेम में बन रहा काटते है. हैं ना उसको। अच्छा. Maguire is a good defender for rival clubs. True, true. Maguire Maguire and good only goes together when you talk about toilets. Everything else decent is the peak of human achievement. भाई साहब, in So hindsight मोहम्मद is telling मगवायर को लिवरपूल को बेच दो, एनफील्ड में अच्छा खेल लेगा लीड्स वो। भी चलेगी. वो लिवरपूल लीड्स को भी फैन भी बेच है, सकते हैं. वो अच्छा लिवरपूल फैन भी है। मैगवायर इज अ लिवरपूल फैन एंड वैन डाइक इज अ यूनाइटेड फैन, तो स्वैप कर दो, स्वैप कर क्या दो. बात. I think Vivek isn't here. तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा होगा. Possible. So guys, we are coming to an end of this discussion today. बहुत मजा आया. इंडिया का मैच के बाद आप लोग आए, you tuned in, you supported us. Please, if you are new here and you haven't subscribed, बस नया नया शुरू किया है, support us, subscribe it. काफी क्रिंजी लगता है जब यहाँ से बोलते हो. जब उस साइड था तब ऐसा गाली मारता था, क्या करूंगा तेरा सब्सक्राइब करके भाड़ में जा. बट देन व्हेन यू कम टू दिस साइड you get a different experience. And the one more special announcement which I did during the video, I'll repeat it. We have a wonderful video coming in for the 112 years of Old Trafford. Do watch it, give your love, and I hope you have a great day. And Yeah, you'll see hopefully, this video if you click the bell icon here. well, ये सब नहीं करेंगे हम, बस बोल रहे हैं अगर यूनाइटेड फैंस हो तो वी आर हियर फॉर यू. एंड अगेन आई विल रिपीट, एवरी सेशन आई रिपीट, वी आर हियर फॉर यू. एनी टाइम यू गाइस वांट टू ट्यून इन एंड चैट विद अस on these calls, we are here for you. Definitely get in touch. I agree with Kunal here. Any final thoughts, guys, before we wrap up? It's Leeds. We need to win. we are going to win. I don't see us drawing or losing this game until and unless we get back to our usuals and do the individual mistakes. I don't see us losing this game. Ooh. So if we get 200 subscribers, so we are at 50, optimistic target. We'll give our first giveaway, backslash Manchester United home jersey player edition from one of the Anurag side. members, Anurag side. Wow, guys, go and do subscribe. बना रहा हूँ मैं 200 Uh, अकाउंट. so it's Leeds, full house, Allen Road. Let's do it. GGMU guys.
GG anyways, good night. चलो, गुड नाइट, थैंक यू।